today we will discuss pair of angles as we already discussed in class. Okay, so today we will discuss again by using this calendar. So pair of angles में first we have discussed adjacent angles. Adjacent angles क्या होते हैं? When we have two arms, when we have a angle which is one arm is common and one vertex is common. जब हमारे पास एक arm common हो और एक vertex common हो तो the particular angle is called वो adjacent angle. यहाँ पे जो हमारे पास QS arm है वो इस angle के लिए भी common है और इस angle के लिए भी common है. So this particular angle is called adjacent angles. Now moving to linear pair, when the sum of two angles makes 180 degree, then it is called linear pair. आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो AOC एंड COB ये दोनों एंगल्स मिला के कितना बन रहा है 180 डिग्री. देन AOC एंड COB इज कॉल्ड लीनियर पेयर. ठीक है, जब भी दो एंगल्स 180 डिग्री सम करते हैं तो पर्टिकुलर एंगल्स को आप लीनियर पेयर कहलाओगे. Now moving forward, vertically opposite angles. When two lines intersect to each other, the common vertex, जो कि बीच में common vertex होगा, that makes a vertically opposite angles. Means if we are talking about this angle AOB or BOC, it is not mentioned here. We have already mentioned line M or line N are intersecting lines. तो फिगर में एंगल 1 उसके जो सामने वाला एंगल है दैट इज एंगल 3. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड इट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो इफ वी ड्रॉ टू लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन. What is the meaning of transversal line? A line which intersects two or more line is called transversal line. तो जब भी हमारी दो लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो the angle made by interior part and exterior part that is called corresponding angles. So angle 3 is equal to angle 7, angle 8 is equal to angle 4, and in the same way angle 2 is equal to angle 6. Means one angle is from interior part and one angle is from exterior part. So that particular angle is called corresponding angles. Okay. Now talking about alternate angles. As the name suggests, alternate means one angle is from either side of transversal line. एक angle transversal line की left side होगा, दूसरा right side होगा. If we have two parallel lines and a transversal line, so one angle 3. So डाउनवर्ड है और एंगल 5 जो है वो अपवर्ड है. यानी कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन इधर और उधर होगा तो आप उसको बोलोगे अल्टरनेट एंगल. इसी के बाद में नाम जुड़ जाता है अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अगर द एंगल्स made in an interior part then it is called alternate interior angles, and the angles made in a exterior part of the lines then it is called alternate exterior angles. Okay, so in this way angle 1 is equal to angle 7, angle 1 or angle 7 we can see it is the exterior part. So angle 1 is equal to angle 7, it is called alternate exterior angles, and angle 3 is equal to angle 5, alternate interior angles. In a same way angle 4 is equal to angle 6, alternate interior angles, and angle 2 is equal to angle 8 which is alternate exterior angles. Okay, now interior adjacent angles. So as the name suggests, interior, so it is made inside the two lines. यानी कि दो लाइन के बीच में होंगे. यानी कि एंगल 1 एंगल 3 they are called adjacent angles, and इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 they are called adjacent interior angles. Thank you everyone.